Good Morning, morning, sir. sir. Morning. Morning. Hanji. Any doubts so far up till now, whatever we have done? Any Good morning, doubts? sir. Morning, morning, everybody. Any doubts on whatever we have done so far? All okay? Can I move ahead? Okay, I'll move ahead. The next topic that we are coming on to is free surface effect. Free surface. Now, free surface effect is basically, as we all know, is due to a slack tank. So, so if a tank is slack, which has liquid in it, this is the liquid in the tank and it is slack. Now, what will happen is this will cause, supposing with the fluid in the tank and the vessel having a heel or a roll simultaneously at sea. So, what will happen is the supposing the vessel rolls to heels to starboard. Okay, the moment the vessel will heel to starboard, this liquid will go like this. It will increase on the starboard side, decrease on the port side. So, as a result, what is going to be the effect of this on the stability of a ship is what we are trying to discuss. So, what will happen is the the G of the vessel will increase on the starboard side by this much distance. It will go up, and the G on this side will decrease by this much distance vertically. So this is called as a immersed wedge. This is this is called as a emerged wedge. This is called as a immersed wedge. So this wedge effect is going to cause a vertical shift in the direction of G. So the G will consequently rise. If the G will consequently rise, the Gm will consequently decrease or become less. So the Gm will decrease. The metacentric height will decrease. But then the very next moment, the wedge is going to go on the opposite direction, the other side. So when the vessel comes, rolls onto the port side, this immersed wedge is going to come onto the port side, and the emerged wedge is going to come onto the starboard side. So once that happens, like this time there'll be a shift like this, and there'll be a shift like this, which will of course be equal. So what is happening is, due to this fluid motion, the G of the vessel is constantly fluctuating up and down
And as a result, the GM of the vessel is fluctuating up and down. This loss of GM, which is going to happen, is called as a virtual loss of GM because it is not an actual loss, it's a virtual loss. It's for an interim period only because very shortly, when the next rule will come, the GM will increase when the G goes down. So this fluctuating GM is called as a virtual loss of GM. And that virtual loss of GM is synonymous to what is called as free surface effect. This free surface effect leads to what is called as free surface correction. And free surface correction is given by a formula IDI by W, where I is moment of inertia. I is moment of inertia. I can write it in capital also, same thing. We can write it in capital, IDI. I, moment of inertia, for a rectangle water plane is LB cube by 12. I, for a rectangular water plane, this water plane is a rectangle. This is a rectangular water plane. So basically, the water plane is a rectangle. This is the water line, WL. Length is L. Sorry, length is L. Breadth is B. So this is the centerline axis about which we are taking the moment of inertia. So that is called as LBQ by 12. L is the length of the tank, B is the breadth of the tank, and this gives us free surface correction. And what is the rule of this? Rule of this is Km minus Kg gives me what is called as GM solid, and GM solid minus FSC will give me GM fluid. Km minus Kg gives me GM solid. GM solid minus FSC will give me GM fluid. And this FSC is this FSC, free surface correction. The correction due to virtual loss of GM, which is caused by free surface effect, which is a result of a slack tank, slack liquid tank. So if I make my tank completely empty or make my tank completely full, I will be removing free surface effect. I will be removing the I, moment of inertia. So that is what we always try to do. Hanji, any doubt so far? Any doubt? Sir, why in the I we use LB cube? Why in a I we call use LB cube? Because जो भी मेरी वाटर लाइन होगी, जितना भी मैं पानी लूँ टैंक में, तो द वाटर लाइन विल बी एट दिस लेवल, जो भी है लेवल है, तो उसकी जो वाटर प्लेन की जो मेरी शेप है वो रेक्टेंगल होगी. इट विल बी शेप लाइक अ रेक्टेंगल. Okay, sir. And this is a standard formula. I of a rectangle is LB cube by 12. Okay, sir. That's why. Moment of inertia. Moment of inertia is also called as second moment of water plane area by definition. Second moment of water plane area. Second moment.
दैट मीन्स ये जो मैं ऐसे फ्लूइड मूव करता है, ऐसे रोटेट करता है, ऐसे 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 कर रहा है, तो जो दो बारी, एक बारी ऐसे मूव किया, फिर दूसरी बार मूव किया, दो बारी, तो ये फ्लूइड इधर गया, फिर इधर आया, फिर वापस आया, तो इसलिए सेकेंड मोमेंट कहते हैं उसको। सर एक GMS और एक GMFL है सर, ये कौन सा है सर? ये कौन सा वाला? GM KM माइनस KG बराबर इक्वल टू GMS। ओके, तो यहाँ तक ओके है? इज दिस यस ओके? सर, यस सर, G, so this is S stands for solid, यस यस सर, ओके सर। and now GM solid minus free surface correction gives me what is called as GM fluid. अब ठीक है? यस सर। सर ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगल बताया है, वैसे ही सिलेंडर शेप के लिए अलग रहेगा इसका फॉर्मूला? एब्सोल्युटली राइट। तो अगर अगर इसमें सर्कल होता तो सर्कुलर वाटर प्लेन, दैट मीन्स तो उसका सर्कल का अलग होगा, सेमी सर्कल का अलग होगा, ट्रेपीजियम का अलग होगा, ट्रायंगल का अलग होगा, हर एक का अलग होगा। बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ये जो है ये शेप ऑफ वाटर प्लेन है, अंडर वाटर शेप नहीं है, नीचे की शेप की बात नहीं कर रहा ये शेप ऑफ वाटर प्लेन, जो मेरी वाटर प्लेन है उसकी क्या शेप है? जो वाटर को टच कर रहा है जो प्लेन, वहां पे जो शेप। एब्सोल्युटली राइट। जो वाटर को टच कर रहा है प्लेन, वहां की शेप, वहां की हॉरिजॉन्टल शेप, दैट मीन्स गोइंग अलोंग द लेंथ, बिकॉज दिस वेसल इज गोइंग अलोंग द लेंथ लाइक दिस, तो ऐसे जो जा रही है स्लाइस, उसकी बात हो रही है। समझ में आया? द स्लाइस विच इज गोइंग लाइक दिस, विच इज कटिंग द वेसल एंड गोइंग अलोंग द लेंथ, तो वो कुछ ऐसी होगी। ड्राफ्ट का टॉप मार्क सर, हाँ जी, ड्राफ्ट का टॉप मार्क है ना सर, वो वाटर लेवल। ड्राफ्ट का यस मार्क, यस ड्राफ्ट का। बट इस केस में मैं ड्राफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इस केस में मैं बात सर, कर रहा यस हूँ सर, साउंडिंग की बात कर रहा हूँ। इस केस में मैं साउंडिंग बात कर रहा हूँ, द साउंडिंग इनसाइड द टैंक। यस सर, थैंक यू सर। Because basically it is caused due to the liquid inside the tank. मतलब सर जब टैंक के अंदर पानी टेबल सरफेस बना रहा है, वही तो शेप। क्या हुआ? जो टेबल सर जो पानी सर वो बना रहा है, शेप बना रहा है, वाटर प्लेन ही है। करेक्ट, तो वो रेक्टेंगल ही होगी हमारे लिए। वो रेक्टेंगल ही होगी। सपोजिंग मेरे जहाज की शेप, सपोजिंग मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं, ये है, दिस इज अ शेप ऑफ अ वेसल, है तो नहीं है बट ऐसी है ये मेरा। अब इसमें मैंने पानी भर दिया यहां तक, तो इसमें ये टैंक के अंदर में मैंने पानी भरा, ये मेरा अंदर की साउंडिंग है। तो मेरे व्हाट इज द शेप ऑफ माय वाटर प्लेन? रेक्टेंगल, ऐसे ये जा रही है स्लाइस, ये है। सो शेप ऑफ माय वाटर प्लेन इज रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है, सो एल बी क्यूब बाई 12 ऑफ अ रेक्टेंगल। सो हमारे लिए, हमारे को समझने के लिए हमारे को हमेशा बस ये एल बी क्यूब ही याद रखना है और कुछ नहीं याद करना है। बाकी फॉर्मूलेज अभी हमारे नहीं है, वो फेज 2 में आते हैं हमारे सिलेबस में, वो मेट्स में आएंगे। ठीक है, इज दिस ओके? कैन वी मूव अहेड? So let us now come to the questions.
So we are going to be using these formulas only now. Let's come to so let us start. Okay, so I'm starting off. So let's take example 1. Okay, you are given the following particulars of a vessel: displacement 10,000 tons, kg 9 meters, km 9.8, I, moment of inertia of the surface of the tank about its center line. So I about the center line of the tank is 1242. Units of moment of inertia is m4, meter to the power 4. The RD of HFO, heavy fuel oil, is given as 0.95. You have to find out the GM fluid. You have to find out the GM fluid. So km minus kg will give you what? GM solid, sir. The solid GM. GM solid. Okay. GM solid. Now you have to find out the FSC. FSC. IDI by W. I into DI divided by W will give you FSC. How much does this come to? Zero point 117. 0.11 7 आगे क्या है 7 के? 799. 799 तो 18 हो गया ना? Yes. Be very careful with your calculations like this. Don't make these mistakes. Be very, very careful. So FSC is coming as 0.118. So GM solid minus FSC will give you Sir, GM fluid. GM fluid. वो कितना आता है?
Sir, 0.682. So ये आपका आंसर है. Is that okay? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. तो इसी तरीके से अगर इसमें मैं आपको 3 टैंक्स और दे देता तो the FSM of each of the tanks would have been calculated. So IDI is called as FSN, free surface moment. So FSC we know is equal to IDI upon W, and IDI is known as free surface moment. तो अगर मेरे 3 टैंक हैं तो जो तीनों स्लैग टैंक हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद देयर रिस्पेक्टिव डेंसिटीज ऐड होते जाएंगे और टोटल फ्री सरफेस मोमेंट डिवाइडेड बाय W विल गिव मी द टोटल FSC. ठीक है, इज दैट ओके? Let's come to example 5. Example 5. So there is a vessel of displacement 5,000 tons. KM is 7.8. kg is 7 meters. So minus कर दिया. So GM solid will be 0.8 meters. Number 2 port DBT 2 port is slack, is partly full, slack of fresh water. So it's a freshwater tank and it's got slack. Dimensions, length of the tank is 15 meters, breadth of the tank is 9 meters. Find the GM fluid. So निकालो. So calculate moment of inertia first. पहले I निकालो. I निकालने के बाद FSC निकालो. एंड फिर FSC को माइनस करो एंड GM फ्लूइड निकालो. .618 meters, sir. This is your GM fluid, correct? Yes, sir. 0.618
618 meters. सबका सेम आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Anybody, any difficulty in understanding? क्या इसे कर रहे हैं हम, क्या करना है? Please ask. किसी को समझ नहीं आ रहा है? पहले आई निकालोगे LBQ/12 से, इस आई को सब्स्टिट्यूट करोगे FSC में और इस FSC को यहाँ पे GM सॉलिड में सब्ट्रैक्ट कर दोगे. Okay. Next. So basically हमने ये देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा न्यूमरेटर में है आई, एंड आई is LBQ/12. That means moment of inertia is directly proportional to breadth cube. जैसे ही मेरी breadth बढ़ेगी मेरा moment of inertia बढ़ेगा, और अगर मेरा I बढ़ेगा तो my free surface moment is directly proportional to I, तो free surface moment बढ़ेगा, and FSC is directly proportional to FSM. जैसे ही फ्री सरफेस मोमेंट बढ़ेगा फ्री सरफेस करेक्शन बढ़ेगा, एंड GM इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू FSC. अगर फ्री सरफेस बढ़ेगा तो GM घटेगा. मुझे चाहिए GM घटे ना बढ़े, तो उल्टा होना चाहिए. अगर GM बढ़ना तो FSC घटना चाहिए, FSC घटेगा तो FSM घटना चाहिए, FSM घटेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटना चाहिए, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटे तो इसका मतलब है ब्रेड्थ घटनी चाहिए. यानी कि जितनी मेरी ब्रेड्थ कम होती जाएगी टैंक की उतने मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड देयरफॉर मेरा FSC घटता जाएगा. सो अगर मेरा जहाज सपोजिंग ऐसे है और ये मेरा DB टैंक है, पोर्ट टू स्टारबोर्ड एक कंप्लीट, तो इसकी बाकी सारी डायमेंशन सेम है, और ये ऐसे फ्री सरफेस किस जहाज का ज्यादा होगा? सर ऊपर वाले का. क्यों? ब्रेड्थ ज्यादा है. सिंपल लॉजिक, वेरी सिंपल लॉजिक. इसकी ब्रेड्थ ज्यादा है, इसकी ब्रेड्थ B/2 है. तो इसकी कब होगी? और मैं इसको और कर दूं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूं B/3, तो इसकी और कम हो जाएगी. दैट मीन्स द मोर नंबर ऑफ subdivisions I keep creating and I keep reducing the breadth, therefore a vessel free surface will keep coming down. Is that okay? Is that fine with everybody? Yes, sir. Okay. So okay. So let us come to those questions now where the breadth is in question. So let us come to example 6. So ship of displacement 10,000 tons
Number 3 dB tank is partly full of salt water. So slack tank. Length 20 meters. Breadth 18 meters. Calculate the FSC cost. So this is very simple to calculate. FSC will be equal to IDI upon W, and I is nothing but LB cube into DI upon 12W. So length is 20, breadth cube is 18 cube, density of liquid inside salt water, so 1.025 divided by 12 into 10,000. That will give me my free surface correction. That is 0.996. Now, same case, identically, example 7. Now, this same dB has a bulkhead and it is divided into port and starboard tanks. So wing tanks, equal breadth. Find the free surface. So this time we will have 3 port and 3 starboard. Divided, that means we are halving it basically. So let us see the effect when the tank is divided into wing tanks, port and starboard. So find out the free surface. So we will find out the FSC for 3 starboard. So same way, 20. This time the breadth becomes 9. So 20 into 9 cube into 1.025 over 12 into 10,000. So this will be the FSC The for 3 0.1245. 0.1245. Similarly, the FSC for 3 port will also be the same. This will be the FSC for 3 port. So the total FSC for both the vessels, both the tanks, will be 0.1245 plus 0.1245 is equal to 0.2497. 0.249. Now you can see the FSC just by merely putting one division has almost become 1/4. 0.249 hence is far less than 0.996. It's become 1/4. Correct? Yes, sir. And so similarly, if I make it into 1/3, immediately it'll get far lesser than this. If I make it into 1/4, it'll get far lesser like this. So what is happening?
Basically, the moment I am doing this, the compartments are slack. The total FSC is becoming 1/4. So basically, the FSC is becoming 1 by n square. N is the number of tanks being divided, where Dn is the number. So if I'm dividing it into 2, the FSC is becoming 1 by 4. If I divide it into 3, the FSC will become 1 upon 9, and so on and so forth. Have you understood what I'm trying to do here? एक बार ये समझा दीजिए। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। Okay. Basically what I'm trying to say is कि मैंने टैंक को कितने हिस्सों में डिवाइड किया? मैंने टैंक को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 पोर्ट एंड 3 स्टारबोर्ड। सो n कितना है मेरा? 2। यस सर। जब मेरा n 2 होता है, what is my proportion of 0.249 to 0.996? My free surface, but what is the ratio? My ratio of 0.249 divided by 0.996 is equal to what? Is equal to 1 by 4? Yes, sir. So can I write this as 1 upon n square, where n is the number of tanks divided, which is equal to 1 upon 2 square? Agreed? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So अगर मैं इसको 3 में करता डिवाइड, तो can you tell me the FSC? It will be 0.996 divided by 3 square. So how much will be the FSC? 0.1 0.1 1 0.110 06. 06. Similarly, अगर मैं 4 में करता, तो you can find that out, and so on and so forth. Have you understood this part? What have I done? Yes, sir. Any doubt on it? No, sir. Okay. All right. Now let us move ahead and come to coming to example 10. Vessel of displacement 10,000 tons. Vessel of displacement 10,000 tons. KM 9.3. kg 7.3. Has 2 rectangular identical deep tanks, port and starboard. Each is 15 meters long and each is 10 meters wide. Each is 10 meters wide and 8 meters deep.
The starboard deep tank is full of salt water, while the port deep tank is empty. Okay. So एक हमारा ये rectangular deep tank है. ये divided है into port and starboard. ये port है, ये starboard है, और ये हमारा ऐसे चल रहा है. ठीक है. लेंथ 15 है, ब्रेड 10 है, हाइट 8 है. The starboard deep tank is full. So starboard is full of salt water and port is empty. So starboard ऊपर तक भरा हुआ है, port खाली है. ठीक है. Now calculate the GM of the ship when 1/4 of the water, so 1/4, that means 1/4. ये 1/4 पानी, that means 8 मीटर की हाइट है, तो कितना पानी आया हमने ट्रांसफर किया? 2 मीटर. 2 मीटर. तो ये मैंने 2 मीटर का पानी यहाँ से ट्रांसफर कर दिया इधर, तो यहाँ पे कितना पानी जाएगा? 2 meters. यहाँ पे भी 2 मीटर जाएगा. High on cocaine. I was drunk. Can you please put your mics on mute? That's my birthday present. I had plenty left, but I was out of vodka. And this is in Portsmouth, Virginia, Asad, where can you please put it instead on of selling mute? So, यहाँ से मैंने 2 मीटर का पानी ट्रांसफर किया स्टारबोर्ड से पोर्ट में, तो यहाँ पोर्ट पे भी 2 मीटर का 2 मीटर ही आएगा. यस सर. ओके. नाउ अब यहाँ पे भी स्लैक हो गया, ये भी स्लैक हो गया. ठीक है. सो स्लैकनेस आ गई है मेरे दोनों टैंक्स में भी. ऑल्सो मेरी जी जहाज की अब इतनी नहीं रही. अब मेरी जो जहाज की जो केजी है वो 7.3 के रिस्पेक्ट में क्या होगी? सर कम हो जाएगी. सर कम हो जाएगी सर, नीचे शिफ्ट हो गया वेट. Does everybody agree on this? Yes, sir. Okay. So मेरी जी कम हो जाएगी. As a result मेरा GM क्या होगा? बढ़ जाएगा सर. बढ़ जाएगा. इंक्रीज होगा सर. तो GM इंक्रीज होगा. ठीक है. GM इंक्रीज होगा. उसके बाद now let's talk about free surface. फ्री सरफेस पे क्या इफेक्ट आएगा? मेरा फ्री सरफेस बढ़ेगा या घटेगा? फ्री सरफेस बढ़ेगा सर. पहले तो 0 रहेगा क्योंकि एक पहले खाली तो है और 0. एक पूरा भरा हुआ है. तो अब मेरा फ्री सरफेस बढ़ गया. सो अब उसका इफेक्ट मेरे जीएम पे क्या आएगा मुझे वो देखना है. सो मेरा जीएम फ्लूइड घटेगा. करेक्ट. Correct? Yes sir. All right. So let us see what was the initial amount of water in the starboard tank. So what was the weight or mass of water in starboard tank? So, Sir, 1230 tons. so volume into density is equal to, So 1230. yeah. Is everybody got that?
Is everybody okay with this? 1230? Yes, sir. Okay. Yes, Now, sir. now 1/4 of it, 1/4 of it has been transferred. So what is the mass transferred? So 307.5 tons. Yeah. It will be 1/4 of 1230 will be 30. So 307.5. Is this okay with everybody? This will be the mass of water. So 307 tons हमने यहाँ से निकाला तो यहाँ पे भी 307 टन ही गया. Agreed? Yes, GG1 we know will go down is equal to WD by W, where small w is the amount of mass you have transferred. D will be the vertical distance between the center of gravities of the two weights which are shifted. ये distance is going to be your D. All right? Is this understood? This will be, इसका G जो weight मैं यहाँ से shift कर रहा हूँ उसका G यहाँ पे है और जो जा रहा है वो यहाँ पे है. So D is the G to G1 vertical distance. So D will be total height is 8 minus 1 here and minus 1 here will be equal to 6 meters. ये समझ में आया कि नहीं? सर ये डी नहीं समझ में आया. डी नहीं समझ में आया. जो वेट है जो मैंने डिस्चार्ज किया या ट्रांसफर किया उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रहा. यस सर. जो वेट जहां पे मैंने शिफ्ट किया ट्रांसफर किया उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है. यस सर. D is the vertical distance between the two center of gravities. यस सर. So वो कितना होगा? टोटल हाइट 8 मीटर माइनस ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है, दोनों 1 को माइनस कर दिया तो D 6 मीटर हुआ. Is that okay? Yes, sir. Okay. So put the values 307.5 into 6 divided by 10,000 will give you GG1. So 0.185. 185. Okay. Now, old kg was 7.3. GG1 downward is 0.185. So minus because it is going down. So kg1 will be how much? That is your new kg. So 7.115. All right. Km is 9.3. So can you tell me the GM solid? So 2.185. Any doubts up till here?
Is this okay? Is this okay? All right. Now, FSC. For an undivided tank. Or I can take a divided tank. I can calculate port separately, starboard separately. Whichever you want. I can do that. So I calculate for FSC for port tank. Will be equal to IDI by W. Is equal to LBQ DI upon 12W. Length 15. Breadth will be how much? Sir, 10 meters. 10 cube into density 1.025 divided by 12 into 10,000. Sir, 0.128 meters. 0.128. So FSC for starboard will be same. Notice FSC is independent of the sounding. So FSC for the starboard will also be 0.128. So total FSC will be 0.256. It is independent. चाहे इसमें 1 मिलीमीटर पानी हो, FSC will be the same. और चाहे इसमें 98% पानी हो, तो भी FSC same रहेगा. It's independent of the volume of the tank. It is independent of the sounding of the tank. So GM solid minus FSC 0.256 will give you GM fluid. So GM fluid will be equal to Sir, 1.929 meters. 1.929 meters. Right. सर एक बार ये डी का बता दीजिएगा प्लीज. डी का बता दूं. सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो मैं वेट शिफ्ट कर रहा हूं, ये वेट मैं शिफ्ट कर रहा हूं, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे है? हाफ ऑफ इट साइड. इसकी यहां पे है. हाँ सर. और जो मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है? उसके हाफ पे. हाँ सर. तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर ऑफ ग्रेविटीज व्हेन आई एम शिफ्टिंग अ वेट? थैंक यू सर. अंडरस्टूड. ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है. सो 8 - 2 हो जाएगा. Okay. All right. Please do this exercise now. Your exercise is ready to be attacked. So please attack this exercise. There are 20 questions in it. Do them very carefully. There are some tricky questions.
especially question number 15 onwards, the trick starts. 15 to 20 questions will have some trick in it. Okay, so please complete exercise number 10. Then we will tackle whatever difficulties you are facing. We'll tackle it in the class. All right? Is that okay? Yes, sir. All right. Yes, sir. Yeah. Please do exercise 10 and complete it. All 20 questions. Okay? Okay, sir. Thank you. All right. Okay. Bye. Thank you, sir. Bye. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye. Thank you, sir. Bye. Bye.